Hello students, myself Professor A.B. Pomne from Residential Junior College Ahmednagar. Student, you know very well there are three measuring methods of elasticity of demand. First method, ratio method or percentage method. Second method, total expenditure method. And third method, point method or geometric method. We have studied first two measuring methods of elasticity of demand in the previous video. Now today we are going to discuss of the third method, that is point method or geometric method. The ratio method and total expenditure method are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve. Therefore, Professor Alfred Marshall has developed yet another method to measure elasticity of demand, which is known as point method और ज्योमेट्रिक मेथड. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने रेशो मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है. व्हेन रेशो मेथड इज़ यूजफुल, तो इसका आंसर है इफ़ द डेटा अबाउट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड and percentage change in price is given, then ratio method is suitable to calculate elasticity of demand. When ratio method is useful, if the data about percentage change in quantity demanded and percentage change in price is given, then ratio method is suitable to calculate elasticity of demand. And when total expenditure method is useful, तो इसका आंसर है if the statistics of total expenditure is given, then total expenditure method is suitable to calculate elasticity of demand. When total expenditure method is useful, if the statistics of total expenditure is given, if the statistics of total expenditure is given, then total expenditure method is suitable to calculate elasticity of demand. ओके, लेकिन जब मांग वक्र के ऊपर दिए गए बिंदु पर इलास्टिसिटी का मापन करना हो, तो ये दोनों मेथड यानी कि रेशो मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड असमर्थ है. वी कैनॉट कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व बाय यूजिंग द रेशो मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इसलिए मांग वक्र के ऊपर दिए गए बिंदु पर इलास्टिसिटी का मापन करने के लिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने और एक पद्धति को विकसित किया है, जिसे पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड इस नाम से जाना जाता है. एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, elasticity of demand is measured with the help of the following formula. और क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है पॉइंट elasticity of demand is equal to lower segment of demand curve below a given point upon upper segment of demand curve above a given point. Lower segment of demand curve below a given point upon
upper segment of demand curve above a given point. Symbolically, point ED is equal to L upon U. Point ED is equal to L upon U. Point ED is equal to L upon U. Demand curve may be either linear or non-linear as shown below. Now first, let us see the part of linear demand curve. So a linear demand curve. Linear demand curve. When the demand curve is linear, that is a straight line, then we extend the demand curve to meet the y-axis at a point and x-axis at b point. Price elasticity of demand at x-axis is 0. Price elasticity of demand at x-axis is 0 and y-axis is infinite स्टूडेंट, मांग वक्र जब रेखाकार यानी सीधी रेखा स्वरूप में होता है तब हम उसे y अक्ष के a बिंदु तक और x अक्ष के b बिंदु तक बढ़ा सकते हैं यानी एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, x अक्ष के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। कहाँ? x अक्ष के ऊपर। और y अक्ष के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिट यानी अनंत, असंख्य होती है। कहाँ होती है अनंत? y अक्ष के ऊपर। y अक्ष के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिट यानी अनंत होती है, असंख्य होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड will be different at each point on the linear demand curve. Elasticity of demand will be different at each point on the linear demand curve. This is shown in the given diagram. In this diagram, x-axis represents quantity demanded and y-axis represents price in rupees. Let us assume that AB is a demand curve and its length is 8 cm. Point elasticity at various points on a linear demand curve can be measured as follows. इस डायग्राम में AB मांग वक्र है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर कंसीडर की है। AB मांग वक्र पर P बिंदु जो सेंटर में है और वो मांग वक्र को 2 समान हिस्सों में डिवाइड करता है। इसलिए P बिंदु के नीचे यानी PB का अंतर 4 सेंटीमीटर है और P बिंदु के ऊपर PA का अंतर भी 4 सेंटीमीटर है। सो P इज इक्वल टू PB अपॉन PA इज इक्वल टू 4/4 और फाइनली आंसर आता है 1। Thus, at point P, demand is unitary elastic. At point P, demand is unitary elastic. Demand is unitary elastic. Symbolically, ED is equal to 1. Then, at point P1 is equal to P1B upon P1A is equal to
2/6 और फाइनली आंसर आता है 0.33 0.33। Thus, at point P1, demand is relatively inelastic. At point P1, demand is relatively inelastic. Relatively inelastic. Symbolically, ED is smaller than 1. Elasticity of demand is smaller than 1. Elasticity of demand is smaller than 1. Then at point P2 is equal to P2B upon P2A is equal to 6/2 और फाइनली आंसर आता है 3। Thus, at point P2, demand is relatively elastic. At point P2, demand is relatively elastic. Relatively elastic. Symbolically, ED is greater than 1. Elasticity of demand is greater than 1. Elasticity of demand is greater than 1. Then at point A, the point elasticity is infinite. At point A, the point elasticity is infinite because upper segment is 0. Thus, at point A, demand is perfectly elastic. At point A, demand is perfectly elastic. Perfectly elastic. Symbolically, ED is equal to infinite. Elasticity of demand is equal to infinite. Elasticity of demand is equal to infinite. Then at point B, the point elasticity is 0. At point B, the point elasticity is 0 because lower segment is 0. Thus, at point B, demand is perfectly inelastic. At point B, demand is perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Symbolically, ED is equal to 0. Symbolically, elasticity of demand is equal to 0. Okay, student, let us see the part of non-linear demand curve. So, B, non-linear demand curve. When the demand curve is non-linear, that is convex to origin, to measure price elasticity of demand, we have to draw a tangent AB touching the given point on the demand curve and extending it to meet y-axis at point A and x-axis at point B. स्टूडेंट, मांग वक्र जब गैर रेखाकार यानी कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है तब प्राइस इलास्टिसिटी का मापन करने के लिए सबसे पहले एक टैंजेंट यानी स्पर्श रेखा निकाली जाती है जो मांग वक्र के ऊपर के पॉइंट को स्पर्श करके y और x अक्ष को जाकर मिलती है। इस डायग्राम के अंदर डी डिमांड कर्व है और इसके ऊपर जो ई बिंदु दिया गया है वह प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए ए बी ए टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा निकाली है जो ई बिंदु को स्पर्श करके y अक्ष पर ए बिंदु में मिलती है और x अक्ष पर बी बिंदु में मिलती है।
Here, by using the formula, we can calculate price elasticity of demand at point E on the non-linear demand curve DD, and formula is ED is equal to lower segment of the tangent below a given point upon upper segment of the tangent above a given point. क्या है फॉर्मूला? ED is equal to lower segment of the tangent below a given point upon upper segment of the tangent above a given point. Symbolically, ED is equal to L upon U. ED is equal to L upon U. If EB is equal to EA, then demand is unitary elastic. Symbolically, ED is equal to 1. ED is equal to 1. If EB is greater than EA, then demand is relatively elastic. Symbolically, ED is greater than 1. Elasticity of demand is greater than 1. And if EB is smaller than EA, then demand is relatively inelastic. Symbolically, ED is smaller than 1. Elasticity of demand is smaller than 1. Okay student, here the part of methods of measuring price elasticity of demand is over. Remaining part of this chapter we will see into the next video. Thank you and have a nice day.